Okay, dear student, in this video you will see we will understand how to represent any rational number in P upon Q form. तो हम लोगों ने ऑलरेडी वन वीडियो में टाइप 1 कवर कर लिया, तो ये हमारा टाइप 2 है. सो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस को हम सेम सिमिलर मेथड से डील करेंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस इन P upon Q form. So again you will consider here let x is equals to 0.4777. Here you can easily identify what is the meaning of this bar. तो इसका सिंबल का क्या मतलब है, जो बार ऊपर लगा हुआ है 7 के ऊपर, उसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो 7 डिजिट है हमारी क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 0.477. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ओनली सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल ऑन विच देयर इज नो बार. हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 10 से, दैट मीन्स सिंगल डिजिट से एक जीरो से क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड यू विल गेट 10 into x is equals to 0.4777 multiplied by 10. So when you multiply you will get 10x equals to you will get 4.777 so on. Okay, now again you will see that after decimal we have only single digit which is repeating. यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इक्वेशन 1 यू कैन से दैट दिस इज इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में दोबारा से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हाई वी आर अगेन मल्टीप्लाइंग विद द 10 स्टूडेंट. हम लोग दोबारा से 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 10. हम लोगों ने इस 10 को क्यों मल्टीप्लाई करा था, बिकॉज डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी थी जिसपे हमारा बार नहीं था, जो रिपीट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. नाउ अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो हम दोबारा 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा वाला जो 10 है वो हम इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर जो डिजिट रिपीट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10. अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 in equation 1. Okay, so when you multiply by 10 equation 1, what will you get? You will get 4.777 multiplied by 10. So you will get 100x equals to 47.777 so on. So you can say that this is your equation 2. So now subtract equation 1 from 2. So you will write from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 you can directly write 100x minus 10x equals to 47.777 minus 0.7, this is 0.4777. Okay, so when you subtract this you will get 90x here, and here what will you get, so you will get 47, but you need to identify, sorry, this, we have 4.77, so instead of this we have this 4.777 so on. So when you subtract 4.77 from 47, what will you get, so you will get 43. Okay, so our answer will be 43 upon 90. So further it will not be divisible, so that's why this is the final answer of this question. Okay, so we can represent 0.47 bar in P upon Q form. So this is a P upon Q form. Similar way we have to solve this second question too. Now again we will see let x is equals to 0.23535 and so on. Okay, 5 we have written 3535 again and again because here you can see that we have bar on only 3 5. तो हमारे पास जो बार है वो 3 and 5 के ऊपर ही है, इसीलिए यहाँ पे 3 and 5 क्या हो रहे हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस. नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर डेसिमल के बाद सिर्फ हमारे पास एक ही डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रही है. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन both sides. Okay, so what will you get?
you will get 10x is equals to 0.23535, so on, multiply by 10. So when you multiply, you will get 10x equals to 2.35. Here you can see that when you multiply by 10, so this decimal will be shift one digit to right hand side, so you will get 2.3535, so on, and you can say that this is your equation 1. Okay, now what you have to do, now you have to see कितने digits हमारे repeat हो रहे हैं. So you can easily identify we have only 2 digits which is repeating here. Okay, तो यहाँ पे 2 digits हमारे repeat हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 2 0 से multiply करना पड़ेगा. Now this time we will multiply by 100. So now multiply by 100 on both sides. 100 on both sides. So when you multiply by 100 on both sides, what will you get? 100 into 10x equals to, in equation 1 we have to multiply, in equation 1. Okay, so now you will get 2.35, so on, multiply by 100. So when you multiply by 100, what will you get? You will get 1000x equals to, now if you multiply 100 with this, so this decimal will be shifted to 2 digit right hand side, so you will get 235.35, so on, and you can say that this is your equation 2. Now again same steps we have to follow. So we will subtract equation 1 from 2, so you can write from equation 1 and 2, so we can say that 1000x minus 10x equals to 235.35 minus this part 2.3535. Okay, now when you subtract this, what will you get? You will get 990x, and when you will subtract this, you will get 233. Okay, now transpose this, so you can write it as 233 upon 990. This is your final answer of this question. So in this way you can represent any rational number in P upon Q form, and these will be the steps that you need to follow. Okay.